Hello, welcome all. Today we will be discussing about our unit 1, which is fundamentals of cloud computing. As we have discussed it earlier in our syllabus discussion lecture कि cloud होता क्या है? What is cloud? What is mean by cloud computing? Okay, so today we will be discussing what are the fundamentals of cloud computing, and in that we will be discussing what are the characteristics, what are the deployment models we have, what are the architecture we have. So let's discuss what is cloud computing. So cloud computing is on-demand delivery of IT resources over the internet. This is the most cleanest, or you can say one-liner of definition of cloud computing. लेमैन में मैं आपको समझाता हूँ क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है. क्लाउड कंप्यूटिंग इज यूजिंग समवन एल्स फिजिकल रिसोर्सेस via internet that is available to you. So if I am a user, I don't have a physical, like you can say, computer existing to me, but I want to use the computational power, so I will use internet, access the power of that resources and complete my tasks. There are use cases of cloud, like user can run applications, can access from any devices, can use as database to use store files, or you can say servers you can create there your own, like that only. Cloud computing basically allow users to access computing resources over internet, or you can say using their own computer servers. You can use cloud servers, and you can use any software at any point of time, like that. There are various of examples, like we have Gmail, Google Drive, or you can say Microsoft 365, Netflix, AWS. All these things are based on cloud computing and they are doing the same. Further on, we will be discussing about the types of cloud computing we have: public cloud, private cloud, and hybrid cloud. गाइस एक छोटा सा पॉज लेते हैं अभी अभी तक का लेक्चर आपको कैसे लगा? आई हो आपको पढ़ाने का जो तरीका है वो समझ में आ रहा होगा और कंसेप्ट्स भी दिमाग में फिट हो रहे होंगे. सच बताओ तो डिप्लोमा में सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या होता है? सिलेबस बहुत बड़ा है, टाइम हमेशा हमें कम लगता है और एग्जाम्स आते ही पैनिक शुरू हो जाता है, राइट? लाइक नोट्स कहाँ मिलेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स कैसे सॉल्व होंगे और आखिर मोमेंट पे जो डाउट्स है वो किसे पूछेंगे, राइट? सो अगर आपको आज की टीचिंग यहाँ पे पसंद आई और आप चाहते हो कि पढ़ाई में ये पैनिक हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, तो आप हमारी डिप्लोमा क्लासेस का फुल कोर्स यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो. इसको हमने डिज़ाइन ही इस तरह से किया है कि स्टूडेंट की हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ पे आपको मिल जाए. इस एक सिंगल कोर्स में आपको मिलता है कंप्लीट वीडियो लेक्चर बिल्कुल डिटेल में, प्रॉपर नोट्स ताकि एग्जाम टाइम में इधर उधर ना भागना पड़े, हमारे फेमस पीवीएमपीस का अर्ली एक्सेस जिसका सबसे ज़्यादा डिमांड होती है, फिर डाउट सेशन आपकी हर कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए, पीवाईक्यू रिवीजन और रेगुलर टेस्ट जो आपको आने वाले यूनिट टेस्ट और फाइनल एग्जाम दोनों के लिए 100% रेडी रखेंगे. सो ये सब कुछ अलग अलग लेने की आपको यहाँ पे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन आर वन कोर्स. और सबसे अच्छी बात क्या है, हमने इस प्राइसिंग को अफोर्डेबल रखा है ताकि हर एक स्टूडेंट इसका फ़ायदा उठा सके. कोर्स की प्राइसिंग ये स्टार्ट होती है सिर्फ 999 से. अगर आप अपनी पढ़ाई को लेकर यहाँ पे सीरियस हो और इस बार एग्जाम में सच में टॉप करना चाहते हो या अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हो, तो इस कोर्स को आप ज़रूर चेकआउट करना. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. तो चलो अब वापस आते हैं अपने लेक्चर पे और आगे के टॉपिक्स को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं. So let's discuss what are the characteristics of cloud computing. So students, the characteristics of cloud computing states that, since we know right now what is mean by cloud computing, so cloud computing basically provides computing resources over internet in an efficient, you can say flexible or cost effective manner. So इसके characteristics क्या क्या होते हैं? First,
rapid elasticity and scalability. What does this means? Rapid elasticity means cloud resources can automatically increase or decrease based on user demand. As user demands about how much resources he required, how much database storage it requires, so we can manage the cloud accordingly. Suppose इसका एक example, like if the workload increases or we need additional servers to allocate storages, और you can say when suppose मेरे को पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही थी किसी रिसोर्स की, suppose there is R1 resource, R2 resource and R3 resource, और there is a time when I used to use all three resources, but since now currently I am using only one resource which is R1. So जो ये बाकी के दो रिसोर्स है इनका काम नहीं है ना कुछ, so हम इनको रिमूव कर सकते हैं. Like in physical system, if there is a physical system we are having, उसमें अगर आप ये चीज़ करेंगे तो आपको लाइक फिजिकली हार्डवेयर और एसएसडीज को निकालना पड़ेगा उसके मदरबोर्ड में से. बट इन क्लाउड वी कैन इंक्रीज एंड डिक्रीज अकॉर्डिंगली, और ये बहुत हेक्टिक होता है. सो हेंस वी हैव इम्प्लीमेंटेड दिस ऑन क्लाउड, सो वी कैन मैनेज हियर ओनली. फॉर एग्जाम्पल, इफ ड्यूरिंग like a Flipkart sale, you can imagine if there are website servers which is host the website, and since बहुत सारे लोग like during sale everyone is sending request to the Flipkart web servers, तो इतना सारा ट्रैफिक हैंडल करना फ्लिपकार्ट को भी, लाइक फ्लिपकार्ट नोज कि इफ वी अनाउंस अवर सेल सो कस्टमर विल कम, और अगर उस टाइम आपकी साइट डाउन रहती है तो एक कस्टमर के ऊपर बैड इंप्रेशन पड़ जाता है. सो व्हाट इट डज, it manages the traffic by creating more servers, by getting those extra servers. And since the sale is of only 1 week or you can say 1 month, फिर उस सेल के बाद जो उसने सर्वर्स ऑर्गेनाइज कराए थे एक्स्ट्रा टू मैनेज दोस ट्रैफिक, अब उतना ट्रैफिक आ ही नहीं रहा है इनकमिंग. सेल खत्म हो गई, नाउ फ्यूअर पीपल्स आर ऑर्डरिंग राइट नाउ. सपोज पहले साइमल्टेनियसली 10 लोग, 10 पीपल्स वेर देयर सेंडिंग रिक्वेस्ट, नाउ ओनली 2 पीपल्स आर सेंडिंग रिक्वेस्ट. तो ये जो रिमेनिंग है इसको क्या कर सकते हैं अपन, इसका कोई यूज केस ही नहीं होगा, तो इसको रिमूव कर दिया जाता है. So this is what we called as rapid elasticity and scalability. Now what does automation means? Automation means cloud services perform tasks automatically without requiring manual intervention. Like in physical system, why I am calling this out always a physical system, ये आपको अंडरस्टैंड कराने के लिए मैं कहता हूँ कि फिजिकल सिस्टम हमेशा एग्जिस्टिंग हार्डवेयर में होना चाहिए, और जो क्लाउड सिस्टम होता है वो वर्चुअली एग्जिस्ट करता है. दो it uses our physical shared resource but it exists virtually only. So what does this automation का मतलब तो आपको समझ ही गया होगा कि सारी चीजें ऑटोमेटिकली होनी चाहिए उसमें, लाइक नो ह्यूमन रिक्वायर्ड. सपोज अगर मैं इस पीसी पे बैठा हूँ, सो आई एम रिक्वायर्ड टू प्रेस द कीज और you can say give the signals to IO devices like keyboard and mouse. input output devices को मेरे को हाथ से वो करना पड़ेगा, मैनुअली ऑपरेट, देन आई कैन ऑपरेट दिस सिस्टम. बट क्लाउड को वी कैन, लाइक देर आर एल्गोरिदम्स जो क्लाउड को ऑटोमेटिकली पूरी तरह से मैनेज करते हैं. सपोज यू हैव गूगल ड्राइव, द वेयर लेक्चर इज अपलोडेड, ऑटोमेटिकली सिंक्रोनाइजेस फाइल्स वेन एवर यू मेक चेंजेस. अगर मैं इस लेक्चर में कुछ चेंज करता हूँ, इट विल सिंक्रोनाइज those uploads and that automatically it will change those accordingly. Now what do we have next? We have security. Cloud providers protect data using advanced security mechanism. So इसमें बहुत सारी चीज़ आ जाती है, आपका डेटा इनक्रिप्शन, डेटा डिक्रिप्शन, उसके भी काफ़ी सारे एल्गोरिदम्स हैं. देन वी हैव फायरवॉल्स,
then we have antiviruses to protect and और वो सारी चीजें करती क्या है, to access and regulate. What does these two words means? Access and regulate. Access to provide access to specific users only, and regulate what are the things are processing right now. It will be regulate accordingly कि उस चीज को कैसे प्रोसेस करना है. Now what does this pay as you go? Users pay only for the cloud resources they actually use. Now if there is a physical system, or you can say physical resource, I'm using or I'm owning it, so I am paying for that whole resource. If there are multiple physical resources, so why would I pay for these resources when I'm using this only? So users pay only the cloud resource they are using right now, और उसके accordingly वो उतना ही पे करते हैं. This is one of the characteristics of cloud computing. Measured services. Cloud system automatically measures and monitors resource usage. Like in physical systems, we have CPU usage, then we have RAM usage, then we have storage. So in measured services, na cloud is monitoring all this. Ki how much user is using right now, how much network bandwidth is having, how much runtime it is processing. So उसके accordingly आपको pay करना होता है in cloud systems. Budget friendly. Since अगर आपको कोई चीज़ परफॉर्म करनी है एंड यू आर थिंकिंग कि सर मैं एक फिजिकल सिस्टम खुद बिल्ड करता हूँ एंड आई विल बी परफॉर्मिंग दैट ऑन माई फिजिकल सिस्टम, so it will cost you more. And since after artificial intelligence and other data centers, SSDs, or you can say HDD, hard disk drives and solid state drives, both दोनों का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है because they are having right now the increase in their price hike due to AI is consuming all those. So better आप पूरा सिस्टम परचेज करेंगे, देन उसके अंदर अपना कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे, और यू कैन जस्ट पे द 1% ऑफ दैट टू एनी क्लाउड सर्वर एंड यू कैन एक्सेस the same powerful system as you are thinking to build like that. So it is budget friendly in that manner. You can save your money and you can say any cost. The best example is that if I want to play games, so I like to play PS5 games. So I won't be buying na PS5. I will just go to the PlayStation and I will play the game. It will be more effective rather than buying a whole PS5. I would just go to the PlayStation और वहां जाके मैं PS में गेम खेलूंगा. That's it. Now moving on to the next, what we have, broad network access. So what is mean by broad network access? So broad network access क्या होता है students? Broad network access is nothing but cloud services can be accessed over the internet from anywhere using different devices. Like the best example I'm giving you, the lecture is uploaded on Google Drive. I have uploaded through my personal computer. You might be having your laptop, or you can say desktop or anything, and you are accessing the lecture. Someone is accessing the same lecture from their phone. So this is what cloud provides us, broad network access, where in whatever devices we just want to log in our Gmail account, and then we can access this data. So this is one of the characteristics of cloud computing. Moving on to the next, we have on-demand self-service. Now what does this mean, on-demand self-service? User can provision cloud resources whenever they need them without contacting the service provider. Suppose, as I said earlier,
that I am the owner of this physical system. You are accessing this via internet. So to access this, if you are paying me, like you comes under this subscription, so you don't have to ask me every time that should I use your resources, should I ask, like should I use your resources, like every time आपको ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं आपका रिसोर्स यूज करूं क्या. सिंस यू हैव पेड टू मी, आप उस सब्सक्रिप्शन के अंडर लाई कर रहे हो, देन यू आर अलाउड टू यूज माई रिसोर्सेज ऑन डिमांड, बिकॉज क्लाउड प्रोवाइड्स resource availability 24/7. Anytime you can use my resources. But in physical system, this is not possible. Like, for example, सेम PS वाला एग्जाम्पल, PS के भी कुछ टाइमिंग होते हैं ना, वो लाइक सपोज मॉर्निंग 11 AM से लेके 5 PM तक ही ओपन रहता है. इफ आई वांट टू प्ले एट 3 AM, तो वो रिसोर्स अवेलेबल नहीं है मेरे लिए. दैट इज व्हाट वी कॉल एज ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस. Easy maintenance. So now what does this means, easy maintenance? Cloud providers are responsible for maintaining the infrastructure. Like they perform what a cloud maintenance. इसमें क्या चीजें परफॉर्म की जा सकती है? क्लाउड मेंटेनेंस में आप ये सारी चीजें परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक द सॉफ्टवेयर यू आर यूजिंग, सॉफ्टवेयर अपडेट्स, देन वी हैव security updates, or you can say security patches, the physical resources we are using, replacement of that resources. Now your question might be कि हमने तो वो physical resource own नहीं किया है, so why would in cloud it is using as easy maintenance? So इसका best example ये है कि if you are owning the physical resource ना, it is hard to maintain the physical resource, like to continuously clean those resources, then manage, then check hardwares, if there are replacement of that hardwares, everything. But in cloud, what we have, suppose there is an example of Microsoft 365. It updates automatically without requires any install updates manually. इस ये अपने आप अपडेट हो जाता है. इसको मैनुअली, you can say, not required manually, it updates automatically. So this is one of the example of, or you can say, characteristics of cloud computing. Moving on to the next, we have resource pooling. What is resource pooling? So cloud providers combine computational resources. Suppose I am the cloud provider, I will combine these two physical machines to host my cloud server into shared pool. What you can say, shared pool. एक shared memory में सारा कुछ allocate होता है, and then they are dynamically allocated to multiple customers using multi-tenant model. What you can use here? Multi-tenant model. It is a deployment model, so the used resource can be used effectively and you can say efficiently. जो हमने shared resources लगाए हैं physical machines में, उसको हम कैसे effectively और efficiently use कर सकते हैं, that we will be studying here. और this is one of the characteristics of cloud computing. So इससे क्या होता है पता है, ऑप्टिमाइजेशन बढ़ जाता है चीज़ों का. In everything we are using right now, we will be like more focused in optimizing those things, and that's it. So let's move on to the next slide. We have
Deployment models.